ठीक अछि। तो एक्चुअली आगो टिके टिके फटाफट रिवीजन आमे करदबा। आज टार्गेट कौन अछि हमरो? Okay, today in the first class we will be discussing reproductive health, hello, and second class we will be discussing evolution, hello. तो आज टार्गेट अछि हमरो reproductive health first class and इथर हम कौन करिवा टिके रैपिड डिस्कशन करदबा। ओके, रैपिड डिस्कशन ऑफ टॉपिक। तापर कौन करिवा? तापर हमरे ब्यूरोज बही र क्वेश्चंस टिके प्रैक्टिस करिवा। हाउ टू राइट आंसर कौन कौन टिके हम डिस्कस करिवा। तापरे हमें स्पेशल एमसीक्यूज करिवा जेतडा पारुची। ओके, so this is our target for the both the session. हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ आगे करिवा, तापरे हमरो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होला परे सेकेंडरी इवोल्यूशन भी ए बडा टिके टिके फटाफट डिस्कशन टा कर दबा। तापरे ब्यूरो बहिरे डिस्कशन करिवा, तापरे हमें नॉर्मल एमसीक्यूज टिके प्रैक्टिस करिवा। ओके, तो इन दिस चैप्टर द फर्स्ट कांसेप्ट हमर कोन अछि? द फर्स्ट कांसेप्ट हमर अछि बर्थ कंट्रोल, हैला। तो बर्थ कंट्रोल मेजर्स, द रीजन इज हमर जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ जदि हम देखिबा इंडिया रे, तो इंडिया रे एबे जे शेप्ड ग्रोथ कर चली, माने द रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी वेरी हाई, बुझलो कि नहीं? तो सही पे कौन होची एबे वी हैव टू कंट्रोल आवर बर्थ। ओके, बिकॉज जदि हमें देखिबा इवन इन द पास्ट इंडिया रो प्रॉब्लम होची कौन? दैट बर्थ रेट इज कांस्टेंट, माने हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस जो बर्थ रेट थिला एबेर भी बर्थ रेट पाखा पाखी सेम अछि, किंतु डेथ रेट जेहेतु कमी गला बिकॉज ऑफ नाना प्रकार जिंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, इम्प्रूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, वैक्सीनेशन, हैला, तापर ब्रिटिशर्स पळैले, तो एमिति नाना प्रकार कारण पे एबे हमर डेथ रेट ता बहुत कमी जाइछि। ऑल टाइप ऑफ डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी कमी जाइछि, मैटरनल मोर्टेलिटी कमी जाइछि, नॉर्मल डेथ रेट कमी जाइछि। तो सेही पे कौन होची एबे हमर पॉपुलेशन का एक्सपोनेंशियल स्टेज रे बढ़ुछि, हैला। तो सेही पे एबे we government is giving a lot of stress on birth control, हैला। तो सेही पे बर्थ कंट्रोल मेजर्स रे आमे फर्स्ट डिस्कस करिबा कोन? नेचुरल मेथड्स, हैला। तो नेचुरल मेथड्स माने कोन? एइथरे किछि भी आर्टिफिशियल जिंस यूज करा जाए नाही, इट इज जस्ट नेचर। तो एइथरे सबडु फर्स्ट हे गेला कोन? दैट इज कॉल्ड परमानेंट सेलिबेसी, हैला। परमानेंट सेलिबेसी, तो परमानेंट सेलिबेसी रो अर्थ कोन? परमानेंट सेलिबेसी ता माने दैट इज कॉल्ड परमानेंट एब्स्टिनेंस, हैला। परमानेंट एब्स्टिनेंस ता माने कोन? हस्बैंड वाइफ टोटली अलगा रुहन हे गेला। तो जनरली सीन इन एडल्ट कपल्स, माने जार छुआ बड़ हे गेले, तो इथे कौन हबो? मेल एंड फीमेल पार्टनर्स sleep in different rooms, हैला, sleep in different rooms, हैला। so they sleep in different rooms, so से कौन हबो? so they never meet, so chances of pregnancy is 0। तो इसे प्रेगनेंसी चांसेस कौन? प्रेगनेंसी चांसेस 0, STD chances 0, because they will never sleep with each other, तो STD भी चांसेस 0 हो जाउची। एक्चुअली एटा बहुत रेयर, तमे देखिबो नेचुरल मेथड रे STD चांसेस हाई थाए,
बट ओनली दिस मेथड जेहेतु एइथरे मेल फीमेल पार्टनर्स परस्पर संगे कांटेक्ट रे आसंती ही नाही तो दैट इज व्हाई तांकर कोन हे जीवो तो तांकर एसटीडी चांसेस भी जीरो हो ठीक अछि रिस्क जीरो बिकॉज दे विल नेवर स्लीप विथ इच अदर हैला तो एटा रेयर द जनरली आमे देखिबा कि हमर नेचुरल मेथड्स रे रिस्क हाई थिबो एसटीडी हाई थिबो एकमात्र एई मेथड टाକୁ ଛାଡ଼ି देले बाकी सबुथरे रिस्क हाई थिबो आउ एसटीडी हाई थिबो परमानेंट सेलिब्रेशन रे कोन होची हस्बैंड वाइफ आउ संगरे सुअते हैला तापरे नेक्स्ट नेचुरल मेथड कोन ताकू कुआ जाए टेम्पररी एब्स्टिनेंस हैला टेम्पररी एब्स्टिनेंस ता माने कोन आकु आमे रिदम मेथड भी को हैला रिदम मेथड कहि परिबा कैलेंडर मेथड कहि परिबा हैला तो ए सब जिंस करि परिबा एथर कोन होउची एइथरे रूल कोन व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल that there's about important rule कौन that female should have nearly constant cycles हैला तो बटो तो female should have nearly constant cycles तो से तरह कौन हबो जदि हमें गोटे कैलेंडर देखिबा okay of the 28 days हमें कौन जानी छे that suppose this is 28th day this is 5th day this is 14th day okay 14th day so एटा को हमें menstrual phase कहूचे एटा को हमें कौन कहबा proliferative phase कहबा या follicular phase कहबा एटा को luteal phase ओके सो ना एइथरे कौन होउची जो 14th डे ता होची रिस्कीएस्ट डे व्हाई से दिन ओव्यूलेशन हैला सो से पे जो है जेहेतु 14th डे ओव्यूलेशन होची दैट इज द हाईएस्ट रिस्क डे ओके तो आमे कौन करिबा सेइटू 5 दिन एकड़कू एंड 5 दिन सेकड़ू करदबा सपोज 10th रु 18th डे तो एटा को आमे कौन करदबा नो कॉपुलेशन डे करदबा हैला नो कॉपुलेशन डेज माने आपको हमें रिस्क डेज नेबा व्हाई दिस इज टेकिंग रिस्क डेज बिकॉज़ एग केबे भी आखा पकड़ आस पारे तो जदि सेही दिन कॉपुलेशन हैला तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी हाई तो से पे इन केस ऑफ बर्थ कंट्रोल हमें 10th थ्रू 18th डे अवॉइड सेक्स हैला तो अवॉइड इंटरकोर्स इफ एट ऑल जदि जरूरत पड़ गया यूज प्रोटेक्शन ठीक अच्छी तो से दीज डेज आर रिस्की डेज बट जो अदर डेज अच्छी आमर तो नाउ फॉर एग्जांपल 1 रु 10 डे हैला 1 रु 9 नहीं जा एंड सेपटे आमे नहीं जीवा 19 रु 28 तो दीज आर सेफ डेज हेगला सेफ डेज तो एई दिन कौन हबो इंटरकोर्स इज ओके इंटरकोर्स ओके हेगला तो इथरे कौन होउची जो समय रे एग आसुची से समय रे आमे मीट करिबा नाही हैला अंडरस्टूड हैला सो दिस इज द कांसेप्ट बट प्रॉब्लम एथरे कौन अछि बट risk increases if cycle not constant बुझिगला तो सपोज साइकिल उडा कांस्टेंट रिपीटेशंस होउनी तो सेथरे रिस्क बढ़ी छु
ହେଲା ହେଲା ତ ସେଇ କେସରେ ରିସ୍କଟା ବଢି ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ କଣ नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी एड्स नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी एड्स कहीं तो आम नॉर्मल इंटरकोर्स करुचे तो से कौन हम एसटीडी एड्स प्रोटेक्शन हबनी अगेन रिस्क इज हाई कहीं रिस्क हाई क्या जदि साइकिल एपट सेपट हो गला तो गड़बड़ हो रिस्क इज वेरी वेरी है तापरे थर्ड स्टेज नेचुरल प्रोसेस हमर कौन तो थर्ड केस को आम कहूँ लैक्टेशनल एमेनोरिया लैक्टेशनल एमेनोरिया लैक्टेशनल एमेनोरिया एटा केबे होची दैट व्हेन मदर इज लैक्टेटिंग हैला तो जब मदर इज लैक्टेटिंग प्रोलैक्टिन हार्मोन लेवल आर very high and prolactin has anti-gonadotropic effect है prolactin has anti-gonadotropic effect ता माने कौन inhibits GnRH therefore inhibits FSH LH हो गला तो ना तो GnRH आसीबो सेई पे ना तो FSH आसीबो ना तो LH आसीबो ओके तो सेइथरे कौन हबो एग आसीबार चांसेस कम हे जिवो तो देयरफॉर नो साइकिल हैला बट इधर बट कछि प्रॉब्लम but best within first 6 months after delivery है तो बेसी टू बेसी फर्स्ट 6 months आफ्टर डेलीवरी एटा बेटर था बट ऑलवेज बेटर if some other birth control measures are practiced along with ହେଇଗଲା तो ता सांगरे सांगरे यदि आउ किछि प्रैक्टिस करिवो ताठु आउरी फल हैला अगेन नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी एड्स तो एइथरे किछि भी प्रोटेक्शन रहइबनी अगेन एइथरे रिस्क इज वेरी हैला तो रिस्क इज वेरी ओके तो एटा हमर थर्ड प्रोसेस हे गेला कोन नेचुरल मेथड तापरे फोर्थ प्रोसेस कुआ जाए कोइटस इंटरप्टस या आपको विथड्रॉल मेथड को हैला सो दिस इज कॉल्ड विथड्रॉल मेथड एथरे कोन हबो मेल removes penis just before ejaculation. Okay, male removes penis just before ejaculation and ejaculates outside body. ହେଇଗଲା ଫିମେଲ ବଡିରେ ଇଜାକୁଲେଟ୍ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା but our risk is very very high okay and again no protection from STD AIDS
ହେଲା ଏଥର ଅସୁବିଧା କଣ timing of withdrawal is very important, and sometimes pre-ejaculate may also have sperms. ବୁଝିଲ ତ କେବେ କେବେ pre-ejaculate ରେ ବି sperms ଥାଇଥାଏ ତ ସେଇ ପାଇଁ this is again very risky process କିନ୍ତୁ ଏଇଟା most common practice ଏଟା ହଉଛି most common practice because ଏଥିରେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡେନି so that is why it is most common practice ହେଲା so these are the methods that we have discussed is natural methods natural methods ସରିଗଲା ପରେ ଆମର next topic ଆମେ କଣ discuss କରିବା artificial method तो आर्टिफिशियल मेथड्स रे तमर फर्स्ट पळे आछी कोन फर्स्ट पळे आछी बैरियर हला बैरियर मेथड्स ता माने there is a barrier between male and female bodies हला तो मेल एंड फीमेल बॉडी भीतर किसी ना किसी बैरियर रहुछि तो आर सबुठु बेस्ट कांसेप्ट होछि कंडोम्स हला कंडोम्स फॉर मेल एंड फेमिडोम्स फॉर फीमेल्स ठीक अछि तो एटा होछि तमर बैरियर मेथड तो एथरे कोन होछि ओके तो एटा होछि only method that protects from STD AIDS ठीक अछि एटा होछि एकमात्र मेथड that protects from STD AIDS आउ को मेथड STD AIDS ରୁ प्रोटेक्शन दिए नाही ठीक अछि so this is the concept now एइथरे कोन होउची प्रिकॉशंस कोन एइथरे प्रिकॉशंस नाम पड़िबो नंबर 1 that expiry date check करिया कथा okay check expiry date number 2 use only once number 3 keep gap at the tip and wear it on an erect penis ହେଇଗଲା okay so these are the things that has to be done तो एथरे कोन होची एटा होची सबटू सेफ मेथड okay and if you are taking precautions it is very safe हैला तापरे this is for both तापरे जो मेथड अछि जेमति हमर हेई गला सर्वाइकल कैप वॉल्ट diaphragms etc this is only for females हैला एटा worn on cervix personally माने निजे निजे एटा को सर्विक्स ऊपर पिंदिया पड़िबो हैला so prevents meeting of sperm
and egg. The sperm and egg ର meeting को ସିଏ avoid करे ହେଲା but ଏଇଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ risks high. Second ଜିନିଷ no protection from STD AIDS. ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଦିଟାରୁ protection ନାହିଁ ତ risk can be minimized by coupling with other methods. Like, minimize करो like pills या तुम्हारा spermicides. हैला तो spermicides are chemicals that kill the sperm. तो जल्दी ठीक है risk कमेर अच्छी ताले either female go on pills or male go or use spermicides. तो इथरे कौन हबो जल्दी भी sperm उड़ा leak लाग करिला से ताको मार दबो ठीक अछि so this is your कौन these are barrier methods तो से वाला अलग अलग प्रकार barrier methods अछि तापरे नेक्स्ट होछि pills हेला नेक्स्ट होछि pills जोड़ा की oral pills now these pills can be daily pills हेला जदि भूली जीवार चांस अछि weekly pills हेला तो weekly pills कोडा सहेली and this was developed by Central Drug Research Institute Lucknow and एटा होची नॉन स्टेरॉइडल तो डबली सेफ भी हे गेला हैज सेंट क्रोमैन ठीक अछि सो एटा सेफ भी हे गेला स्टेरॉइड नाही एंड एटा तमे सप्ताह को थरे खाई परिबी ठीक अछि डेली पिल्स रे कोन आइदर एस्ट्रोजेन पिल्स थिबो या प्रोजेस्टिन पिल्स थिबो या कंबाइंड पिल्स थिबे ठीक अछि एस्ट्रोजेन पिल कौन करेबो कौन से कौन करेबो माने तमर जो अफेक्ट्स इम्प्लांटेशन से इम्प्लांटेशन करि दबनी तापरे मेक्स स्टे of zygote difficult हैला तो से यूट्राइन मोबिलिटी बढ़ाई देबो या मिसकैरी करे देबो ए वाला सब जिंस करे ठीक अछि प्रोजेस्टिन कोन करिवो से एन ओव्युलेशन करेइबो माने से कोन कहइबो कि आई एम प्रेग्नेंट तो बॉडी रु आउ जीएनआरएच आसीबो ना and GNRH न आसले कौन हबो FSH LH आसीबो ना okay so that is the concept of daily pills fine तो इथरे आमे जो we don't take इथरे गोटे important जिंस मन रखिबो कोन normal hormones are not used instead synthetic ones synthetic ones ताको प्रोजेस्टिन कुआ जाए प्रोजेस्टोजेन एंड एस्ट्रोजेन so not ours हैला तो सेबे प्रोजेस्टोजेन कोटा यूज करा जिवो LNG20 या डेसोगेस्ट्रेल हैला एवडा सब प्रोजेस्टोजेन यूज करा जिवो माने दे आर लाइक प्रोजेस्टेरोन बट दे आर नॉट प्रोजेस्टेरोन ठीक अछि
तो एस्ट्रोजेन जगह रे हमें कौन यूज करिबा नेटेन हैला एवडा जिंस हमें यूज करि परिबा तो नेटेन इज नॉर एथिस्ट्रोन इनांथे हैला एडा जो हमें डिटेल्स पढितले सेबे हम डिस्कस करथिले तो एवडा जिंस यूज करि जो काहे कि हमें नॉर्मल हार्मोन रा यूज करूने केना नॉर्मल हार्मोन उडा हम बॉडी रे ब्रेक डाउन हे जिवो तार ब्रेक डाउन हे गेले तार उद्देश्यटा पूरा हबनी हमें जो पे ताको रखिछे है कि नहीं तो से पे वी आर टेकिंग आर्टिफिशियल हार्मोन्स सो दैट इट डज नॉट ब्रेक डाउन है तो पिल्स हे गला तो सेमती आउ तापर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अछि ईसीपी ईसीपी इज कॉल्ड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव सो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रे हमें कौन यूज करूचे तो वी आर यूजिंग जिनका हमारा अनवांटेड 72 हे गला अनवांटेड 72 आई पिल हैला एवडा सब जिंस यूज करिबा ओके तो एथरे भी हम माने एलएनजी 20 यूज करूछु ओके मैं पचार तो ओके सो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एथरे कौन हुए तो हैज टू बी टेकन within 72 hours of unprotected intercourse ହେଇଗଲା तो within 72 hours हमको नेबाम पड़िबो ओके तो within 72 hours नेले हम माने कौन करि परिबा ओके तो आपको within 72 hours of unprotected intercourse नेले कौन हबो if implantation हे जाइछ if implantation occurs ताको कौन करिवो मिसकैरी कर दबो और प्रिवेंट इम्प्लांटेशन जदि हेइनी ताको इम्प्लांट करी दबो अंडरस्टूड से दी आडुआ काम करिवो जदि इम्प्लांटेशन हेइ जाइछि ताले मिसकैरी कर दबो एक्चुअली सी एलएनजी 20 टा कोन प्रोजेस्टेरॉन भलिया सेटा दुसे सेटा फंक्शन करे ना ता माने कौन हम जेबे तमर प्रोजेस्टेरॉन माने जेबे जोटी जोटी प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर थिबो सेठी जे कि एलएनजी 20 बाइंड कर जिवो तो जेबे एलएनजी 20 प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर रे बाइंड करि गला ताले आउ प्रोजेस्टेरॉन बाइंड कर परिबनी तो सेतरे कौन हबो जो कामटा प्रोजेस्टेरॉन करिवार अछि सेइटा हबो so that is why uterus will not prepare for pregnancy okay the uterus will not prepare for pregnancy and it will result in miscarriage hela jodi implantation heini to se implant kari dabo okay so these are some things that we have to understand okay chala next hela तो एटा हमर आईपीएल हे गला दैट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तापरे मेन जिंस आर मे मोस्ट इंपोर्टेंट आंकर कांसेप्ट कोन यू हैव टू रिपीट करिया पड़िबो माने डेली खाया पड़िबो
वीकली माने वीकली खाइब डेली रे कौन होची 21 दिन खाइबा 7 डे गैप दबो बट अगेन यू हैव टू स्टार्ट एमिति नाही कि भूली जीवो भूली गेला माने इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स ठीक अछि तो सेबे जो माने भूली जीवार चांस अछि से माने एटा न नेले बेटर ओके तो न नेले कौन करिबा नेक्स्ट ऑप्शन कौन इंजेक्शंस इंजेक्शंस नेबा पड़िबो मंथली मंथली इंजेक्शन आसे नहले 3 मंथली इंजेक्शन आसे नहले 6 मंथली इंजेक्शन आसे एइथरे भी सेम LNG 20 दिया होची तो इधर कौन होची तुमको डेली मन रखियार दरकार नहीं मासକୁ ଥରେ ନେଇଗଲେ ଗଲା ସେ 30 डेज काम କରିବ या ଯଦି ମାସିକିଆ ଭୁଲି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି 3 ମାସିଆ ନେଇଯାଅ 3 ମାସିଆ ଭୁଲି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି 6 ମାସିଆ ନେଇ तो ଏଥିରେ କଣ ଅଛି एटलीस्ट पर डे ता हार्मोन आସୁଥିବ ତା କାମ ହଉ क्लियर बट जदि एइटा भी भूली ଯିବାର चांस ଅଛି तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होची कौन इम्प्लांट्स एइथरे गोटे माइक्रो सर्जरी हबो माने एटा इनवेसिव एटा नॉट इनवेसिव एटा माइक्रो सर्जरी हबो एंड छोट छोट रॉड्स गुडा स्किन रे रखा है ठीक अछि स्किन तळे रखा है जीवो तो एटा 1 रॉड पर ईयर हैला तो 1 रॉड पर ईयर तो सपोज तमे फर्स्ट छुआ 5 वर्ष पर चाहूच 4टा रॉड लगे दियो सपोज गोटे छुआ हे जायछि नेक्स्ट छुआ टिके देरी पर चाहूच ताले कोन करिवो जेते देरी पर चाहूच रॉड लगे दियो तो इथरे कोन हबो तमरो टेंशन किसी नाही यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट एवरी डे और मंथ एटसेट्रा से मास पई वर्ष पई तार काम चलै थीबो हैला से तार वर्ष सारा डोज दउतिबो एंड तुमको प्रोटेक्ट करूतिबो तो इथरे कोन अछि तुमको डेली मन रखियार तार किछि टेंशन ना ओके तो वंस यू डू इट दैट इज फिनिश एंड एटा बहुत बढ़िया मेथड इथरे कोन होची इट इज जस्ट लाइक परमानेंट मेथड बुझले कि नहीं माने इथरा टेंशन वेंशन किछि नहीं बट सपोज तमर पीरियड सरी गला तमे आउथरे विद इन 6 to 1 month यू कैन अगेन कंसीव बुझला तो एटा सब बड़ भल मेथड ओके बेसी टेंशन नहीं थरे लगे दियो बट यस एटा गोटे माइक्रो सर्जरी इन्वॉल्व करूछ हैला गोटे छोटिया सर्जरी सेटा इन्वॉल्व करिवो हैला so that you have to understand okay but otherwise it is very safe माने एइथरे आउ तमरा भूली जीवार किसी रिस्क ना ठीक अछि तो सपोज 3 वर्ष लगे थिला 1 year भितरे the girl can again conceive for pregnancy हैला तो एटा होची एई ट्रिक रो भल पॉइंट अंडरस्टूड तो जिमिति हमें बर्थ कंट्रोल करिवा परमानेंट जिमिति हमें आईयूडी लगेबा तो एई भलिया एटा भी गोटे भल ट्रिक ओके इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉलिसी ठीक अछि नाउ सपोज इफ यू हैव अब किंतु एटा लगा हबा सरफेस को दुसिबो बिकॉज सेरा स्किन तळे रखा हे जाय तो इट इज विजिबल माने जदी के आख पाखर थिबो से जानि परिबो कि से लोकड़ा लगे छी हैला माने इट इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड हैला किंतु सपोज तमे चाहूच कि एटा न दुसु जदि न दुसु चाहूच ताहले कोन हबो तो एटा से प्रोसेस न हो इट विल बी विजिबल हैला सपोज इम्प्लांट्स भल लागू नाही ताले नेक्स्ट बेटर टेक्निक होची आईयूडीज या ताको आईयूसीडीज कुहा जाए इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस और इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बुझिगला तो एटा कौन होची एटा टिके असुविधा कौन हुए एटा टेस्टिंग करिया पड़े टेस्टिंग माने
body may reject. तो बॉडी में रिजेक्ट तो से कौन हम बॉडी रिजेक्ट कर दे पारे तो जदि बॉडी रिजेक्शन सिम्पटम दउची ताले एटा यूज करी हबनी तो जदि बॉडी रिजेक्शन सिम्पटम दउनी ताहले एटा यूज करी हबो हैला हैला तो इतरा हमें कौन करिबा सपोज दिस इज द यूट्रस हैला तो सपोज एटा यूट्रस हैला तो कौन हबो विथ असिस्टेंस एटा असिस्टेंस एटा निजे लगे परिबनी विथ असिस्टेंस हैला तो डॉक्टर या नर्स रे असिस्टेंस रे सेटा यूट्रस भितर लगा हे जिवो तो इट विल बी ऑफ द शेप ऑफ ए टी से टी हे पारे ये सेटा स्प्रिंग वाले हे पारे कॉइल वाले हे पारे एस वाले हे पारे तर नाना प्रकार शेप अछि एंड नाना प्रकार आयोडीज अछि हैला गोटे होची इनर्ट आयोडी माने सेता किछि ना खाली ताकू गोटे नॉर्मली गोटे सपोज गोटे टी टे पूरा हे गेला से तो किछि नाही जस्ट ए सिंपल टी तो एटा कोन हबो गोटे फॉरेन जिंस आसीची बॉडी रे तो बॉडी कोन करिवो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाई दबो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज टू थ्रो इट आउट तो बॉडी यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जीवो ताकू फोपाडिया पे चेष्टा करिवो तो फोपाडिया पे चेष्टा करले जो मोबिलिटी यूट्रस रहुची सेतिर कोन हबो इम्प्लांटेशन हबो तो एम्ब्रियो cannot implant हैला आकु cannot implant तो एम्ब्रियोटा जदि आसुची एते डिस्टरबेंस रे से यूट्रस रे इम्प्लांट हेई पारिबो नै क्लियर तो सेही पे तार बढ़िया एग्जांपल होची लिप्स लूप हैला लिप्स लूप तो लिप्स लूप टा इनर्ट आयोडीटा माने सेथरे ना तो हार्मोन अछि और ना ही कॉपर अछि हे गेला नाउ तमे जो आईओडी यूज कर यूट्राइन मोबिलिटी बढ़ी जीव हैला तो यूट्रस र कामटा बढ़ी जीव एंड से प्रेगनेंसी फोपाडिया पे चेष्टा कर ओके बट अदरवाइज कौन हबो तो अदरवाइज तमरो कौन हबो नेक्स्ट पॉइंट ओके तो नेक्स्ट पॉइंट कौन हबो तमे कॉपर आयोडीज लगे पारी हैला कॉपर आयोडीज रे कॉपर टी आसी जाउची मल्टी लोड सपोज मल्टी लोड अलग अलग 375 600 एमती नाना प्रकार तार वेराइटीज अछि हैला नहले हार्मोनल आयोडीज तो हार्मोनल आयोडीज रे हमें LNG20 यूज करूछ तो LNG20 रे स्पेलिंग मन रखियो एटा बहुत इंपोर्टेंट पिला जानंती लिवो नॉर गेस्ट्रेल एटा गेस्टेरॉल मार दबनी स्टेरॉल इट इज नॉट ए सो LNG20 होची लिवो नॉर गेस्ट्रेल तो हैला तो सपोज आमे कॉपर आयोडीज नबो से कौन करिवो तो जो हमर सर्विक्स सर्विक्स को कौन करिवो माने अनफिट कर दबो फॉर स्पर्म पासेज माने विस्कस कर दबो तो स्पर्म को पास करी दबनी तापर कौन करिवो कॉपर इज गैमेटोटॉक्सिक हैला तो कॉपर कौन करिवो स्पर्म को मारी दो हैला LNG20 कौन करिवो से चीटिंग करिवो से GnRH को इनहिबिट करिवो तो सेथरे कौन हबो FSH इनहिबिट हे जीवो LH इनहिबिट हे जीवो तो इथरे कौन हबो देयर विल बी नो ओव्यूलेशन बुझियला तो these are your different type of IUDs एटा अगेन दिस इज द बेस्ट मेथड हैला एटा तमे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन रे भी यूज कर पारो एटा बेस्ट मेथड
इवन जदि जरा गवर्नमेंट रे तमे जाई कि लगाउछ तो सपोज काली गलती रे भी प्रेगनेंसी हेई गला तो गवर्नमेंट तुमको अबॉर्ट करिया पे अलाउ करी हैला। तो मीन्स इट इज नियरली सेफ माने एटा इज नियरली लाइक परमानेंट बर्थ कंट्रोल हैला। जेते हम परमानेंट बर्थ कंट्रोल करछु वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी ना बिल्कुल ता भलिया सेफ हैला। किंतु अगेन एसटीडी एड्स को बचौनी कहीं एटा नॉर्मल फिजिकल कांटेक्ट रहउची बॉडी पे हैला। सो एटारे मन रखिबो नो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी एड्स क्लियर। तापरे जो नेक्स्ट टेक्निक होची हमर कोन नेक्स्ट टेक्निक होची एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी। एथरे कोन हबो तमरो निया होची माइफेप्रिस्टोन हैला। तो माइफेप्रिस्टोन ता संगरे मिजोप्रोजोटॉल हैला। एडा डॉक्टर का गाइडेंस रे नै कि परमानेंसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा है हैला। बट अगेन इट इज बेस्ट विदिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर हैला। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे करवाटा सबुटु सेफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर हैला। इट इज सेफेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओके। ताठू पर कले टिके रिस्क बढ़ी बढ़ी जीवो हैला। नाउ तापरे लास्ट टेक्निक होची परमानेंट मेथड परमानेंट सर्जिकल मेथड हैला। तो इथरे मेल मानकर कौन हबो वैसेक्टोमी एंड फीमेल मानकर हबो ट्यूबेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी रे कौन हबो वास डिफरेंस is cut बाबा and tight। ट्यूबेक्टोमी रे कौन हबो ओविडक्ट is cut and tight ठीक अछि। एटा गोटे छोटिया माइनर ऑपरेशन हैला है कि एटा तमरो परमानेंटली बंद हे जीवो ठीक अछि। तो एइथरे रिवर्सल होची ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हैला। रिवर्सल केबे हबो जदि तमे सपोज विद इन मासे दी मासे या कर दलो हैला। माने सपोज कोन हैला एटा केबे करा हुए एटा करा हुए जेबे हमकु आउ छुआ दरकार नाही हैला। एटा गोटे शॉर्ट टर्म मेथड बोले तमे यूज कर परिबनी। सपोज ऑलरेडी वी हैव 2 चिल्ड्रन और 3 चिल्ड्रन तुमको आउ छुआ दरकार नाही इन दैट केस यू कैन गो फॉर परमानेंट मेथड हैला। एटा कर देले आउ तमरो छुआ हबर बाट नाही। बट यस सपोज किछि दरकार पड़िला इमरजेंसी रे तो विद इन बहुत कम समय एक्चुअली देखो जेते देरी हे जीवो तार रिवर्सल चांसेस कमी कमी जीवो। तो से पे जदी रिवर्सल दरकार इट शुड बी एज सून एज पॉसिबल हैला। काना थरे बॉडी निजे बंद कर दबो प्रोडक्शन तापर रीस्टार्ट करवा एते सहज न हैला। ओके हैला चलो। सो नाउ दिस इज द concept ओके। हैला। So now these are methods. These are methods what? These are permanent methods.
सो एवढा सब नाना प्रकार बर्थ कंट्रोल मेजर्स है। तो तापरे आमे डिस्कस करिवा कोन। So now we will go for other methods. सेथरे we will discuss जदि एटा होचे हम ब्यूरो बही आसला। So this is the book by our कोन our state bureau। तो एथरे बही अछि तो एथरे आमे नाना प्रकार जिंस देख परिबा। तो एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ताको आजिकाली बही रे एसटीआई लिखा जाउती हैला, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो एथरे तुमको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मन रखिया पड़िबो हैला। तो जेमति क्लैमिडिया तो ए जो एग्जांपल लिखिलो क्लैमिडिया, तो क्लैमिडिया के कॉज करूची तो तार सेटा तुमको मन रखिया पड़िबो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। सी एथरे बहुत जिंस मु देखिची इवन व्हेन वी चेक कॉपीज बहुत छोट छोट मिस्टेक्स पिला माने करंती। देखो दिस इज अ साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम रो किछि रूल्स अछि। तो जनरली कौन हुए एटा इवैल्यूएटर माने क्षमा करी दियंती या को इवैल्यूएटर क्षमा करंती, बट सेटा बैड हैबिट डाइज हार्ड एंड केबे ना केबे से देयर यू विल गेट अ टीचर हु विल नॉट फॉरगिव। तो से पे whenever we are using scientific name you should remember spelling should be exactly correct, genus name should be starting with capital, species name should be starting with small letter, and both the words should be separately underlined हेगला। तो से अंडरलाइन टा भी द पार्ट ऑफ द नेम, तो ताकू तमे छाड़ी परिबो हेगला, ताकू भी तुमको अंडरलाइन करिया पे पड़िबो। अंडरस्टूड। तो एटा होची इंपोर्टेंट। तो क्लैमिडिया इज अ caused by Chlamydia trachomatis. Genital herpes, it is caused by herpes simplex virus 2 हैला। तापर genital warts एटा के कॉज करची ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके नाउ तापर गोनोरिया के करची नेइसेरिए। ओके नेइसेरिया गोनोरहोई हेगला। तो से स्पेलिंग गुडा बहुत बहुत क्लियरली मन रखिबो। तापर हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी। ना प्लीज रिमेंबर ए दीटार गोटे यूनिक जिंस अछि, दे आर एसटीडीज बट नॉट एसटीडीज। काई कहला कहना एटा सेक्सुअली ट्रांसमिट हुए, सेक्सुअल न हेले भी ट्रांसमिट हबो, माने देयर शुड बी बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट हैला। तो बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट हेले एटा ट्रांसमिट हबो, फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेले। तो बाकी सबु एसटीडी खाली एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिट होउछ, किंतु हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी टा एंड एड्स टा सेटा अदर देन एसटीडी भी ट्रांसमिट हेई पारिबो हैला। फॉर एग्जांपल तमरो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करलो, ब्लड डोनेशन करलो हैला, तो बॉडी फ्लूइड टू बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट हेले भी आर ट्रांसमिशन हबो। सो एटा से पई बहुत यूनिक, एटा मन रखथिबो हैला। तापरे आसीगला तमरो सिफिलिस। तो सिफिलिस के कॉज करूची ट्रिपोनेमा पैलिडम हैला। तो यू हैव टू अंडरलाइन दोज नेम्स। क्लियर। तापरे हमरा प्रिवेंशन एसटीडी ए सब तमे निजे पढिबे, हम ऑलरेडी डिस्कस करिचे। सो सेक्सुअल ट्रांसमिशन हे गेला हमरा। ओके तापर एमनियोसेंटेसिस गोटे टेक्निक हम तुमको डिस्कस कर दूची। तो एमनियोसेंटेसिस रे कौन हुए, एक्चुअली सपोज
କାହାର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଛି ନା କିଛି ଜେନେଟିକ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ସପୋଜ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଦିଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜେନେଟିକାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହୁଛି ହେଲା। ନିମାନ୍ସ ଡିଜିଜ ଅଛି, ଫ୍ୟାବ୍ରିଜ ଡିଜିଜ ଅଛି, ସ୍ୟାଣ୍ଡହକ୍ସ ଡିଜିଜ ଅଛି, या କୋ ନା କୋ ଡିଜିଜ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେନ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ କେସ୍ ଦେयर ଇଜ ଏ ଭେରି ଗୁଡ ଚାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଆର ଛୁଆର ବି ନୂଆ ଛୁଆର ବି ହେଇପାରେ। ତ ସେଇପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଫର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତ ଆମ୍ନିଓସେଣ୍ଟେସିସ ରେ କଣ ହୁଏ, अंडर अल्ट्रासाउंड ଗୋଟେ ନିଡଲ ଟେ ପୁରା ହବ ବଡି ଭିତରକୁ एंड आमनियन ଭିତରେ ଯୋଉ ଫ୍ଲୁଇଡ ଟା ଥାଏ ତାକୁ କଢା ହବ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଆମନିଓଟିକ ଫ୍ଲୁଇଡ କୁ କଢା ହେଇକି ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାରିଓଟାଇପିଂ କରିବା ହେଲା। ତାକୁ କଲଚର କରିବା ସେଲ୍ସ ଗୁଡାକୁ एंड ତାକୁ କ୍ୟାରିଓଟାଇପିଂ କରିକି ତାର କ୍ରୋମୋସୋମାଲ एनालिसिस କରିବା। एंड ସେଇଥିରେ we can know that if that child is suffering from some abnormal genetic disorders। तो जदि डिसऑर्डर हेबार चांसेस अच्छी तो एटलिस्ट से पेरेंट पाखरे अधिकार अच्छी कि से प्रेगनेंसी टाको अबॉर्ट कर हेगला। सो दिस इज ए आल्सो नोन एज fetal diagnostic test हैला। so that is called fetal diagnostic test। क्लियर। बट एटा रिस्की होची तो समस्ते करिबा उचित नुह हैला। तापरे नेक्स्ट कांसेप्ट हमें इथे डिस्कस करिबा होची इनफर्टिलिटी कौन, स्टेरिलिटी कौन हैला। व्हाट इज इनफर्टिलिटी, व्हाट इज स्टेरिलिटी। तो इनफर्टिलिटी माने कौन होची कि सेई जो कपल ऑलरेडी 3-4 वर्ष हेलानी से माने नॉर्मली सेक्सुअली इंटरकोर्स करूचंती किंतु तांकर छुआ को ना को कारण पे हेई पारु नाही हेगला। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। बट ता माने नुह कि तांकर केबे हबन। ओके, तो तांकु आमे स्टेराइल घोषित पूर्वरु टिके चेक करि परिबा। सो वी कैन टेस्ट देम इफ दे कैन बिकम फर्टाइल। तो डॉक्टर्स पाखु गले से माने आइसोलेट करिवे, दे विल फाइंड आउट रीजंस फॉर द इनफर्टिलिटी। जदि से रीजन को आमे टेक केयर करला परे से कपल कंसीव करि पारुछि ताहले ताको आमे कोन कहबा, ताको आमे कहिबा इनफर्टिलिटी। बट किछि भी कारण परे को भी क्योर कला परे भी सीए ठीक होउनी हैला। फाइन। तो जदि सब ट्रीटमेंट कला परे भी माने छुआ होउनी या मेल रो या फीमेल रो गैमेट ही तैयारी हो, सपोज द मेल हैज नो स्पर्म प्रोडक्शन या फीमेल हैज नो एग प्रोडक्शन, तो एई केस रे तांको आमे स्टेराइल कहिबा हैला। तो जदि स्पर्म हैला, तो सेई पे हमर जदि को कारण रे प्रेगनेंसी हेई पारुनी ताको आमे कोन कहिबा, ताको आमे कहिबा स्टेराइल हैला। ओके, इफ देयर इज नो प्रेगनेंसी चांसेस। ओके, बट जदि किसी साहाଯ୍य नै कि प्रेगनेंसी हेई जाउची देन दैट इज कॉल्ड व्हाट, तो देन दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी हैला। सेई केस रे आमे हेल्प नै कि प्रेगनेंसी अचीव करि पारिबा। क्लियर। चलो, तो एड़ा सब किछि किछि कांसेप्ट्स हैला। तो सेई पे आमे एबे क्वेश्चंस आडू को पळेबा। विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस केमिति कोन लेखा अछि एटसेट्रा। And these things you have already discussed in details in the normal classes हैला। चलो, तो एबे समस्ते आंसर देबा पे टिके चेष्टा करो। तो फर्स्ट आंसर कौन हबो कहलो, यदि हम स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करि देबा सेटा को कौन कुआ जाए। स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चंस। तमे चैट रे आंसर कर परिबो। 1 रा आंसर कौन हबो, जल्दी जल्दी कुआ। व्हाट इज द आंसर ऑफ 1?
चैट रे जल्दी डिस्कस करो, मोनालिसा, राजलक्ष्मी, एवरीबॉडी। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ वन? मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू ओवम। ना कौन को आजीव? Nasreen, Nupur, Pankaj, Pritika, yes, somebody has answered. तो আমার কি आंसर করেছি? Yes, Nasreen answer করছি C, correct. Even BenQ, Nupur all are answering C. Very good. তো তার দাঁড়ে কোন? ইন্ট্রা সাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন। ঠিক ହେଲା? ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଇଣ୍ଟ୍ରା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମିକ ସ୍ପର୍ମ ଇନଜେକ୍ସନ। चलो वेरी गुड। तापर क्वेश्चन टा आंसर करो। लैक्टेटिंग मदर कौन करिवे? डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू। आंसर कौन है जीवो? नसरीन इज टेलिंग ए, करेक्ट। सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स माने तमरो जीएनआरएच बंद हे जीवो, सेई पे एफएसएच एलएच आसीबो नाही। वेरी गुड। तापर थर्ड क्वेश्चन को पढ़ाओ। Which is not a spacing method for family planning? माने ताको हमें टाइम स्पेसिंग पे दे परिवानी। जेमती एक बच्चा हो गया, एक और के लिए बीच में गैप, दैट इज कॉल्ड स्पेसिंग मेथड। जल्दी जल्दी जल्दी, इजी है ये। इट इज नॉट बी, इट इज नॉट बी। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, नसरीन इट इज बी एक्चुअली। दैट इज कॉल्ड टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड क्या है? आपने अगर आपने ट्यूबेक्टोमी या अगर हम लोग क्या वैसेक्टोमी कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल मेथड। गुड, वेरी गुड। तापरे आईयूडीज आर नॉट मेड फॉर, नॉट मेड अप ऑफ। Rubber, correct. The IUDs are not made up of rubber. Nippur is correct. चलो तापरे को cream, jelly, foam are chemical contraceptions of which methods of birth control? ताको chemical method ही कुआजिबो हैला, so that is also called chemical method. ସେଇଥିରେ ଆମେ କଣ କରିବା? We will use spermicides to kill. Seven टा कुआ which is not a method of tubectomy? Implants. तो इम्प्लांट्स टा ट्यूबेक्टोमी नुह हैला। इम्प्लांट से हमें स्किन तले इम्प्लांट करू। चलो विच इज नॉट ए आईयूडी कहलो नाइन्थ रो आंसर टा को। नाइन्थ आंसर कौन हबो? जल्दी जल्दी, नाइन्थ का आंसर क्या होगा? नॉट ए आईयूडी। ये आपका ब्यूरो का बुक है, आपका स्कूल में यूज होता है, कॉलेज में। दिस इज अ मच बेटर बुक देन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो किछि दे ही नहीं पाठ, बट ब्यूरो बॉय बहुत बढ़िया लिखा है बाय आवर प्रोफेसर्स of different colleges and verified by professors in the university. Yes, Nasreen is correct. So not an IUD है world. आंसर 10 करो आंसर।
टेंस का आंसर कीजिए। Which is not a common type of STD. Again, very easy. इनमें से कौन सा एसटीडी नहीं है? यस, प्रीतिका इज टेलिंग कैंसर, करेक्ट। यस यस राजलक्ष्मी, यस एवरीबडी, यस गुड। तापरे करो 11, विच इज फर्टिलिटी ट्रीटमेंट फॉर मेन। मेन के लिए कौन सा है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट फॉर मेन, नुपुर? यस बी, राजलक्ष्मी इज टेलिंग बी, करेक्ट। ओके, बिकॉज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन तो फीमेल में होगा ना, मेल में थोड़ी होगा। चला, तापरे 12th का आंसर करो। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कब करना है? यस, दैट इज 72 आवर्स आफ्टर कॉइटस। ठीक है जी, तो 72 आवर्स के बाद इसको हम करेंगे, विद इन 72 आवर्स, सॉरी, है ना। तापरे 13, यस, एक्चुअली इट इज वेसेक्टोमी। ओवेरिएक्टोमी में ओवरीज निकाल देंगे तो क्या होगा? हार्मोन भी नहीं बनेगा। हिस्टेरेक्टोमी में यूट्रस निकाल देते हैं तो बच्चा होने का कोई सवाल ही नहीं है। कैस्ट्रेशन में गोनाड्स को निकाल देते हैं, चाहे वो टेस्टिस हो चाहे वो ओवरी हो। तो दीज आर नॉट गुड सर्जिकल मेथड। चला, चलो एटा करो, एटा बढ़िया बढ़िया जिनस, बहुत बड़ा बड़ा प्रैक्टिस अच्छी। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो। एनीबॉडी टाइप करो फटाफट। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, एक्सलेंट नुपुर, वेरी गुड। 1:1 सेक्स रेशियो कहाँ मिलता है इंडिया में? ये बहुत रेयर है, बट वी हैव वन स्टेट। चलो इसको बाद में ढूंढ लेना। 5 वाला आंसर बोलो। लूप्स एंड बोज आर द टाइप ऑफ क्या? लूप्स एंड बोज क्या हो जाएगा? आयोडीज। ठीक है। तापरे स्पॉन्ज इज ए फोम कंटेनिंग डैश एज स्पर्मिसाइड। तो स्पॉन्ज में क्या होता है स्पर्मिसाइड? नॉनॉक्सिनॉल 9। ठीक है, नॉनॉक्सिनॉल 9। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है। तापर ह्यूमन डैश इन्फेक्शन, एटा हमारा 13। मेथड ऑफ प्रिजर्विंग स्पर्म इन फ्रोजन कंडीशन इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। पहला, मंथली रिलीज ऑफ एग्स इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। पहला, ejaculated duct in males as confirmed is confirmed by क्या? कैसे कंफर्म करो कि अगर ejaculated duct ब्लॉक हो गया? दैट इज बाय नो, दैट इज कॉल्ड एजोस्पर्मिया, माने आपका जो सीमेन है उसमें स्पर्म नहीं होगा। ठीक ଅଛି, तापर एडा 1-2 मार्क क्वेश्चंस अछि, एडा सब प्रैक्टिस करिवो। डिफरेंशिएट द बिटवीन, तो डिफरेंशिएट में ऑलवेज मेक टेबल हैला। तो वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी क्या है? वैसेक्टोमी मेल, ट्यूबेक्टोमी फीमेल। वैसेक्टोमी रे कौन हबा? वास डिफरेंस कट एंड टाइड। ट्यूबेक्टोमी में ओविडक्ट कट एंड टाइड।
ହେଲା। सो दिस इज द केस। तापर स्पेसिंग मेथड, टर्मिनल मेथड। स्पेसिंग मेथड का मतलब क्या होता है? जैसे आपको दो बच्चों में गैप लाना है, माने यू हैव वन चाइल्ड, यू हैव टू टेक ए गैप बिटवीन द फर्स्ट चाइल्ड एंड द सेकेंड चाइल्ड, तो उसको गैपिंग मेथड कहते हैं। या सपोज आपको पहला ही बच्चा 5 साल बाद चाहिए, तो इसको गैपिंग मेथड चाहिए। तो गैपिंग मेथड माने कौन? अगेन स्पेसिंग मेथड का माने कौन कि वो फिर दोबारा रीस्टार्ट हो पाए। ओके, सपोज वी हैव टेकन ए स्पेसिंग मेथड एंड वी वांट चाइल्ड अगेन, तो वो होना चाहिए। बट टर्मिनल मेथड का मतलब क्या है? उसके बाद और बच्चा नहीं होगा। अंडरस्टूड? सो टर्मिनल मेथड इज नॉट रिवर्सिबल, गैपिंग मेथड या स्पेसिंग मेथड इज रिवर्सिबल। ठीक है जी। सेफ पीरियड, अनसेफ पीरियड। तो सेफ पीरियड हमने क्या डिस्कस किया था? 1 से 9 एंड 19 से 28। এটা ତମେ କୋଉ ବି डेट लिखी दे पारिबो, चलिबो, किसी असुविधा। बट आपका 14th डे जो है वो ओव्यूलेशन होगा, तार एकड़ सेकड़ आमे 4-5 दिन नहीं जीवा। सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग 10 to 18 एज रिस्क डे, हैला, या अनसेफ डे, बिकॉज सही समय इंटरकोर्स करले छुआ हबो। बट अदर 1 से 9 या 19 से 28, दैट इज कॉल्ड सेफ डे। ओके, वाई? बिकॉज उसमें इंटरकोर्स करने से बच्चा नहीं होगा। तो एम सब लिखा है। चलिए, तो ये कुछ प्रैक्टिस हमने किया, अब एक और प्रैक्टिस टाइप करेंगे। ओके, ये है तो ये उसको अब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलो, अब एथर किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा। ये फटाफट आंसर करना है। ओके, चलो, इसका आंसर बताइए। कौन सा क्वेश्चन स्क्रीन पूरा दे देते? ये आपका ब्यूरो का किताब का क्वेश्चन है ना? तो ब्यूरो, आपका जो ब्यूरो वाला किताब है ना, वो ये उसी के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। ओके, चलो, अब ये वाला आंसर बताओ। जल्दी जल्दी, जितना जल्दी बताओगे उतना ज्यादा क्वेश्चन। इसमें 100 क्वेश्चन हैं, तो आप जितना ज्यादा जल्दी जल्दी बताओगे उतना जल्दी खत्म होगा। नॉट करेक्टली मैच्ड।
यस करेक्ट। तो क्लैमिडिया भी क्या है? क्लैमिडिया इज ऑल्सो टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट। ये बताइए। सहेली क्या है? फटाफट, नुपुर, नसरीन। यस, it blocks estrogen receptors in uterus, preventing eggs. ओके, चलो नेक्स्ट। इसका क्या आंसर होगा? 3। ये करेक्ट है। चलो नेक्स्ट। ये वाला करो। आंसर है C 1111। ब्लॉकिंग गैमेट ट्रांसपोर्ट। चलो नेक्स्ट। ये बहुत बड़ा है। ये करो 10। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, जॉय करना। इसका आंसर क्या होगा बताओ? करेक्ट, 2 इज करेक्ट। ये बताओ। परफेक्ट नसरीन, वेरी गुड। आंसर इज 4 ART, एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी।
15 का क्या आंसर होगा? यस, करेक्ट। नेक्स्ट। करेक्ट, इसमें एक ही आंसर आएगा राजलक्ष्मी, नॉट टू। देखो, एक तरह कॉन्डम्स काम नहीं करेगा, इम्प्लांट काम नहीं करेगा, आईयूडी काम करेगा, प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन काम शायद नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ओनली LNG-20 लेते हैं। ओके, दैट इज प्रोजेस्ट्रोजन। ओके, तापर लैक्टेशनल लिमेनूरिया काम नहीं करेगा। चलिए, ओके। सो अभी 9 o'clock हो गया, तो हम लोग थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे। ओके, तुम लोग भी बहुत देर से बैठे हो, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो जाओ, खाना पीना खा लो। वी विल अगेन स्टार्ट द क्लास एट 9:15, एंड उसमें हम लोग रिवाइज करेंगे क्या, इवोल्यूशन। ठीक है, तो आ जाइए आप लोग, इवोल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे इन एट 9:15। क्वेश्चंस का क्या होगा सर, प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्लास में हम लोग इवोल्यूशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अरे सुनो तो, अभी अभी जो अगले अगले महीने आएगा, हम लोग यही चीज प्रैक्टिस करेंगे सब। मैंने अगले आगे क्लासेस में भी मैंने अभी सब 12th का अच्छे से रिवीजन को किया हुआ है। फिर हम लोग आगे जाएंगे 11th रिवीजन के लिए। ओके, तो नाउ आई एम स्टॉपिंग द क्लास फॉर 15 minutes। 9:15 हम रिज्वाइन करेंगे। ओके, फटाफट आ जाना। बाय।